ओके जैसे हमने कहा हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज और आप लोगों के क्वेश्चंस भी वट एवर दे आर सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस suggest using ideas of structure and bonding. Why? Buckminster fullerene is converted from solid to gas at relatively low temperature. Anyone want to answer? Yes, then. Am I audible? Like आवाज आ रही? Screen share. G Zen, you want to answer? Buckminster fullerene is converted from solid to gas at comparatively low temperature as compared to other allotropic forms. Yes. Nurul Huda, Sabiha, Riha. Anyone? कैसे स्टार्ट करेंगे अगर ये 2 मार्क्स के लिए हो तो? Riha, I think you can definitely answer. जी, nobody? Sir, this is because there are weak intermolecular forces or हम due to its हमेशा structure. आपने हमेशा स्टार्ट रेफरेंस से करना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. रेफरेंस क्या है? फर्स्ट टेल द टाइप. आप कहेंगे बिकॉज इट इज अ सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर and has weak intermolecular forces, so comparatively less energy is needed to break these weak forces apart. Remember in O levels they mark your ideas. Simply they mark the idea. Idea दे दिया, they give marks. In A level you have to be completely explanatory. Graphite is a good conductor of electricity. क्या कहेंगे? Sorry, graphene is a good conductor of electricity. What we have to say? So graphene has a free electron moving. That is why. आप कहेंगे ठीक है, आप कहेंगे because graphene, no doubt, is a macromolecule, but each carbon atom has one electron delocalized. You know, in graphene or in graphite, carbon atom uses 3 of its electron for bonding, but fourth one is not used. So it's delocalized. अब कहेंगे graphene has delocalized electrons. One electron per carbon atom is not involved in bonding. Comparison में क्या है कि suppose why C60 is not, तो आप कहेंगे because it's all electrons are busy in bonding. KY diamond is not, आप कहेंगे it's all electrons are utilized in bonding and has no delocalized electrons or ions. Buckminster fullerene is relatively soft. Simple molecular structure, weak interlayered forces, flaky almost. That should be the answer. Wherever there is a relatively soft thing for a carbon thing, it means layers have weak interconnection. And so they can easily be flaky, slippery. That's the answer. Four types of structures are giant molecular, giant ionic, giant metallic, simple molecular. Give 2 examples of a giant ionic structure and 2 examples of a simple molecular structure. Giant ionic, any ionic compound, sodium chloride, sodium oxide, magnesium chloride, or magnesium oxide. These are all ionic. Two simple molecular structures, H2O, water has a simple molecular structure. It finishes off. CO2 has a simple molecular structure. Finishes off. That is why they have weak intermolecular force. So you need less energy to separate them apart. Most of them are either gases or liquids. Very few simple molecular are solids, और अगर solids हैं भी तो low melting solids. But giant ionic structures mean every particle is either a positive ion or a negative ion.
and they are arranged in 3D fashion. They are arranged in very fine layers, and these layers have the energy between, because of electrostatic force of attraction between them, they got an energy that is lattice energy. When they are formed, they release that energy. So you need to supply the same amount of energy to break them apart. आसान अल्फाज में, giant ionic structures, strong electrostatic forces of attraction operates in their 3D crystalline structure. So very high energy is needed to separate them apart. Explain why substantially giant ionic structures are often brittle, but metallic structures are malleable. Ionic structures crystalline, and they may have at some points some planes, brittle, weak planes, through which you can break them apart. But metallic structures are more dense, thick layering, with stronger electrostatic forces between cations and delocalized electrons. But metallic structures have a strong crystalline structure with more thick and dense layering, densely packed, as compared to ionic, where a particle, positive ion, is attracted by a few negative ions, and vice versa, and packing and layering is not that strong. So at some points, there are some cleavage planes. Explain why giant molecular structures have high melting point than simple molecular structures. तो आप कहेंगे because giant molecular structure जैसे ये नजर आ रहा है, it has strong covalent bonds. Don't use the word intermolecular force. Giant molecular structure has strong covalent bonds. There is a network of extensive covalency. So in order to melt, to break, we have to break some covalent bonds instead of simple molecular forces. But in simple molecule, क्यों comparison कह रहा था, आप कहेंगे in simple molecule, its internal structure may be very strong. Remember, when its physical state is changing, you are not breaking these bonds. When a physical state of water is changing, do remember you are not breaking the HO bond. I always say, आप तो बीच वाला force तोड़ते हैं उसका, intermolecular force. And that is the reason they have low melting and low boiling point, and some of them are even vaporizing at room temperature. So you call them volatile. But for a giant covalent structure, they're solid, strong. Giant ionic structures, solid, strong at room temperature. And giant metallic structures, definitely. Diamond and graphite are two forms of carbon with giant molecular structures. Explain why graphite conducts electricity but diamond does not. लेकिन बुक के क्वेश्चंस आपको इतना एक नॉलेज इंपार्ट कर देंगे कि कोई पास पेपर क्वेश्चन जो है इसमें बाहर नहीं निकलेगा. टॉपिकल साथ करेंगे प्रैक्टिस, यू विल फाइंड आउट. Diamond and graphite are forms of carbon with giant molecular structures, allotropic forms. Why graphite conduct? हम कहेंगे because in graphite, जैसे हमने ग्रेफीन में कहा या कार्बन nanotubes में कह ले, which are actually the products of graphite being rolled into U-shaped structures. कहेंगे because when graphite, a molecular structure developed naturally, one electron per carbon atom is delocalized, not involved in bonding. That's the reason. But in diamond, naturally occurring diamond, all electrons are busy in bonding. No delocalized electrons. Some artificial diamonds have some salts in them, cations and anions, and when they are melted, they release, because of those ions, a slush is formed, and that they may conduct electricity. But naturally occurring में ऐसा नहीं है. अब देखें, अब आपको ना कुछ रेपिटेशन शुरू हो जाएगी. यूज योर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग. कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर. तो आप स्ट्रेट अवे क्या एक्सप्लेन करेंगे? इट्स अ सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर. शुरू ही आपने उसकी फैमिली बतानी है. इट्स अ जायंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इट्स अ जायंट आयनिक स्ट्रक्चर, इट्स अ जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर. यहाँ आप कह रहे हैं इट्स अ सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर knitted by weak intermolecular force. So less amount of energy is needed to separate them apart. So they have weak intermolecular forces. That's why CO2 is a gas. And very weak intermolecular force जो CO2 में है वो क्या है?
कौन सी फोर्स वेन डर वॉल की कौन सी टाइप? इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप. Because carbon dioxide is a non-polar molecule. Although oxygens are negative, they are electronegative, and they are dragging the electron shared to themselves. bully कर रही हैं कार्बन को दोनों. But carbon stays slight positive. But since they have a linear shape, carbon dioxide got a linear shape. दो electronic clouds है ना. This is central atom. और central atom A, दो electronic clouds B and B. So AB2 is linear. When it is linear, it means both the vectors which direct from positive to negative end, they are cancelling the effect of each other. So the net dipole is zero. That is why carbon dioxide has no overall charge. So an uncharged molecule will attract only by instantaneous dipole, and they are very, very weak. कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दे कि इसको आप पूरा एक्सरे करके दिखाएं तो आप इसकी इस तरह की डिस्कशन कर सकते हैं. बट नॉर्मली इन सच सिचुएशन जब पूछे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर तो आप कहेंगे भाई बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल मॉलिक्यूल है और सिंपल मॉलिक्यूल वो जो दो चार एटम्स के बाद खत्म हो जाए. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है इनके बीच, लेस एनर्जी चाहिए इनको सेपरेट करने में, और ऑलरेडी दे आर वेरी मच सेपरेटेड अपार्ट देयर गैसेस. आप जानते हैं आइडियल गैस लॉ तो कहता है कि दे हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स. दैट्स व्हाई दे आर गैसेस, दे आर फार ऑफ, they are moving at random. That is the reason, because nobody is bothering about the other. But in liquids, particles have bit attractive force. They bother about each other. In solids, they bother too much that they only vibrate at the fixed position. Silicon dioxide is solid with a high melting point. Why should not? कहाँ से start करेंगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए? Silicon dioxide is a macromolecule. It's a giant covalent structure, has strong covalent bonds. So lots of energy is needed to break these covalent bonds apart. That makes it very high melting thing. Its structure is comparable to the diamond. But कभी पूछे why diamond is more stronger as compared to silicon dioxide? तो कहेंगे because diamond has all sort of bonds between carbon. Although it's also tetrahedral like quartz, silicon dioxide. But in silicon dioxide, the bonds are between silicon and oxygen, and bond lengths vary. So the bond strengths. Carbon, it's uniformity of the bonds all around, all sort of similar sort of attraction, and similar bond lengths, similar strengths, not easy to break. So it may have a melting point quite high as compared to silicon dioxide. Silicon dioxide क्या है? Quartz. Neither carbon dioxide nor silicon dioxide conduct electricity. And straight away आप कहेंगे these are the simple covalent molecular structures जिसे इस बात ने आयनिक का स्टेटस डिनाई करती. These are simple covalent molecular structures. No delocalized electrons or ions. They are not able to conduct electricity. तो आप जब लिखेंगे ना अच्छा तो फिर एग्जामिनर सोचेगा कभी नहीं कि इस बच्चे के मार्क्स काटने. तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से होगा? जब आप ये क्वेश्चंस करके फिर टॉपिकल्स करेंगे. टॉपिकल हर टॉपिक को टच नहीं करता, मैं बार बार कह रहा हूँ. और ओ लेवल्स ने आपको एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन वीक करवा दी होती है बिकॉज ओ लेवल सिंपली मार्क द आइडियाज. इट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन ओ लेवल एंड ए इन राइटिंग सेंस. तो इसलिए वहां बड़े आराम से मार्क्स मिलते हैं. Question is about gases. What is meant by term ideal gas? A gas that obeys all the laws, ideal gas laws. A gas in which the particles have no attractive forces. A gas in which individual particle volume is of no importance. लेकिन 1 mark के लिए थोड़ी ज्यादा भी मिलता है. Under what condition does gas not behave ideally? When ideally the gas particles are far off. And you know that when temperature high, particles are so far off that hardly a variety of them, a company of them fall into a surface to exert pressure. अब कहेंगे at very high temperature, particles are far off, attractive forces are really negligible, and pressure is obviously low. Sir, So
Yes. सर नॉट आइडियल तो लो टेम्परेचर पे नहीं होगा, बिकॉज जब लो टेम्परेचर होगा अच्छा, उनके नॉट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। बिल्कुल सही जैन, शाबाश, यू आर पेइंग अटेंशन, नॉट है। मैं ये पढ़ रहा हूँ, अंडर व्हाट कंडीशन डज अ गैस बिहेव आइडियली? नो, डज अ गैस नॉट बिहेव आइडियली? नॉट बिहेव आइडियली, it means not behave ideally, it means it has attractive forces. When temperature is low, particles cling together, they develop the attractive force. And when they develop the attractive force, they cling together. It means individual particle volume matters because gaps between them are not that high. So not में ये आंसर होगा। अगर आइडियल का कहे तो आप कहेंगे वो यस आइडियल तभी है जब वाकई हवा में कोई पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं कर रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा। दैट इज द आइडियल सिचुएशन। फॉर द आइडियल थ्योरी to operate, it happens in a very harsh summer day. The temperature is very high, pressure is low, you see outside and you feel depressed. There's hardly any air around. But when the temperature slightly depressed down or some convectional currents come, you'll find that gas particles, air particles are moving around. Okay. Helium is a noble gas. It exists as a single atom. Explain why. Helium is a noble gas. It exists as a single atom. Because helium's last shell electrons are complete. It has only one shell need two, and it has both electrons present there. So that is why it stays monoatomic. क्यों monoatomic रहती है? Because its valency electrons are filled, valence shell is filled to its limit. First shell should have two. So helium obeys the duplet rule. Filled है, tension नहीं है उसको. Helium has a very low boiling point. It's a gas. Gases should have the low boiling point because their particles are far off. In order to bring them together and turn them into the liquid and then to the gas, it means you have to first liquefy them by lowering the temperature. And minus 200 and beyond for helium जाएंगे तो फिर liquid बनेगी, फिर boil करेगी. तो suppose अगर -190 पे ये liquid हुई है तो -189 पे दोबारा गैस बनने लगेगी जो boiling point से एक ऊपर आ जाए, हाई कर. लाइक ऑक्सीजन का मुझे याद है -183 है, it mean -184 it should be liquid. नाइट्रोजन 1 -196 पे बॉयल होती है तो -197 should be the liquid. So because they are gases, particles are far off. In order to bring them together and liquefy, you need to lower the temperature a lot so they lose energy to the surroundings. Come closer and then liquefy. That needs a very low temperature. Helium does not conduct electricity. Why should it conduct? Because it has no free electrons or ions. A weather balloon contains 0.500 kg of helium. Kg mean we need to change into grams. Calculate the volume of the gas into the balloon at a pressure of इतना पास्कल्स में दिया हुआ है, नो नीड टू चेंज. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है माइनस में, तो आप +273 ऐड करेंगे. आर इज गिवन के, और हीलियम का ए आर भी दिया हुआ है 4. सो यू यूज द फॉर्मूला. बिकॉज आपको एन कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्या लगाना है आपने, ई वी इज इक्वल टू एन आर टी. तो एन के लिए आपको एम ओवर एम आर करना पड़ेगा. तो एम है 0.500 के जी इंटू 1000 ओवर 4, तो आपका एन आ जाएगा. एन क्या मीन, मोल्स. वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना एंड प्रेशर इज गिवन इन पास्कल्स. नंबर 4, वाटर एंड ब्रोमीन आर बोथ सिंपल मोलिकुलर सब्सटेंसेस. Br2 है और वो H2O है, so definitely no doubt. Both water and bromine form a lattice structure in the solid state. What is the meaning of the term lattice? A fine arrangement of particles in layers which may project in 3D fashion
is called a lattice. Lattice is the term used. Lattice is the term used for fine arrangement of particles in layers, and these layers may project in 3D fashion to form a crystalline structure. Because आइस को भी आप देखिए क्रिस्टल्स होते हैं, से ही जब पर बनी होती है तो आप देखिए क्रिस्टलाइन होती है. So as the bromine. अब कहेंगे because in solid state particles are arranged in very fine layers. Layers goes in 3D fashion. आइस का तो टेट्राहेड्रल लैटिस होता है. So that makes it as a lattice, solid. Boiling point of water is 100. The boiling point of bromine is 59. Explain the reason for the difference in terms of intermolecular forces. Yes. अब तो कोई बच्चा बताएगा. Anyone? कल मैंने जो आपको एक वर्कशीट भेजी थी, नहीं असाइनमेंट भेजी थी, दैट वाज बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ माइन, योर सीनियर. तो क्लास में ये सारा काम करवाता हूँ मैं, उससे राइटिंग पावर और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं. डोंट थिंक इट्स कॉलेज दैट हम उसे वो कर लें. आप लोगों ने लिखना जरूर है. मेरे पास टेबल पे अभी बच्चों की असाइनमेंट्स और चीज़ें पड़ी हुई हैं ऑफ ऑल दीज राइटिंग्स, ऑल दीज थिंग्स शोन अरेंज वेरी फाइन. उनको कभी उन्होंने स्कूल में इतना काम नहीं किया होगा जितना उसमें करते हैं. इफ आई कैन शो यू अप दिस, आपको यकीन है व्हाट आई से. हाउ कैन आई शो यू दिस बिट, मे बी विद वीडियो. सर आपको नजर आ रहा है? देन इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay, so when it is visible it's fine. Diminished लिखा होगा, but very fine. Look at that, all arrangements, all these questions. जब इस तरह से आप करते हैं तो आपको सी सॉर्ट ऑफ रिसर्च बेस्ड पता चलता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा लिख लिया, इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस कर ली हैं. तो अब अगर हम पास पेपर्स करेंगे तो फिर कैसे होगा कि हमें जो है पास पेपर्स में राइटिंग पार नहीं होगी. दिस, और मैं उठना नहीं चाह रहा, वरना इसी बच्चे की मेरे पास तो 5-6 ऐसी कॉपीज पड़ी हैं. दिस सो जस्ट अ मोटिवेशन कि आप लोगों ने ऐसे करना है. इसलिए अपने तौर पे अगर आप ये 2 years अपने आप को थोड़ा स्कूल का बच्चा समझ के काम कर लेंगे, यू विल फाइंड आउट चीजें बहुत आसान हो जाएगी. ओके, वी आर मूविंग बैक. ये लेवल्स एक दुनिया को मुश्किल लगता है, आपको पता है. ऑलमोस्ट 85% बच्चे अच्छा ग्रेड नहीं ले पाते. रीजन इज बिकॉज दे थिंक इट शुड बी लाइक ओ लेवल्स, जस्ट डू इट, have some lesson from the teacher and go through the past papers and put something there on the paper, scratches and scribbling and all that, and you get any in any case CD and all that. But it is a research based program. इनको बहुत एक्सटेंसिवली ये करके एक्सटेंसिव पास्ट पेपर्स करने पड़ते हैं. टू मच. ओके, both water and bromine form. Okay, हो गया. Boiling point of water is 100. Boiling point of bromine is 59. use ideas about. तो आप वही आइडियाज बताएंगे इस तरह से करके. इसे अगर लिखने लगे ये, यस, तो आप कहेंगे बिकॉज ब्रोमीन is Br2 and it's a non-polar simple molecular structure. Word use करेंगे non-polar simple molecular structure. Reason non-polar because between two bromine the electron pair should be equally shared. This electron pair, so किसी एक तरफ नहीं गया वो. As a result, it stays as a non-polar. And bromine is a simple non-polar structure, and non-polar molecule depends on weak induced dipole-dipole force, instantaneous dipole-dipole, that turns into induced dipole-dipole by this method, you know.
पहले एक मॉलिक्यूल पे इंस्टेंटेनियस डायपोल आती है, और फिर वो अपने पार्टनर को इंड्यूस कर देता है, उसके नेगेटिव क्लाउड को उधर पुश कर देगा, रिपेल करेगा, दिस साइड विल बिकम पॉजिटिव, एंड इन बिटवीन देम टेम्परेरीली एन अट्रैक्टिव फोर्स एस्टेब्लिश होती है। इसलिए आप इनको कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। शायद लंदन में डिस्कवरी हुई थी, वेंडरवॉल एंड साइंटिस्ट ने किया था। दीज आर वेंडरवॉल फोर्सेस, सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वेंडरवॉल सारी होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उनमें ये जो नॉन पोलर के बीच होती है, ये इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल डायपोल कह सकते हैं, टेम्परेली इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल कह सकते हैं। बट फॉर वाटर यू विल से वाटर has, I always say this thing, water has a bent V-shaped structure with oxygen slide positive and hydrogen slide negative, oxygen slide negative and hydrogen slide positive. You know that these two vectors. Water is perfectly polar, and neighboring oxygen with the lone pair will obviously attract the slide positive hydrogen. तो आप कहेंगे पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, and hydrogen bonding is more appreciable in intermolecular force as compared to simple instantaneous dipole dipole present in bromine. पूरा comparison बताया आपने. Hydrogen bonding needs high energy to break, so that is why it boils at 100. But simple bromine molecules are knitted by a weak instantaneous dipole dipole force, which need less energy to separate them apart. That is the reason. Fuse ideas about kinetic particle theory to explain what happens when liquid bromine evaporates to form bromine vapor. Liquid bromine to bromine vapor. कहेंगे when use ideas about kinetic theory to explain what happens when liquid bromine. When temperature is supplied, our liquid bromine gains energy from the surroundings, so their particles start moving rapidly. At a certain point, they break apart those attractive forces and overcome the atmospheric pressure, start jumping into the air. So it means at that time they are evaporating. आपने बताया ideas about kinetic theory to explain liquid particles. In liquid bromine, particles are unmoved, they are sliding past each other, and when energy is supplied from the surroundings, they gain it. Their kinetic energy become more, their movements become rapid, their intermolecular forces weakens, start jumping into the air by overcoming the atmospheric pressure. Then when 0.20, ये सारा आपका enrichment क्या है, बेसिक नॉलेज की, जिसे आप पास पेपर्स पे यूटिलाइज करते हैं. When 0.20 gram of liquid Y with a simple molecular structure was evaporated, it produces 80 cm cube of vapor. Temperature was, आप इस सारी चीजों को अगर अंडरलाइन करें तो 80 cm cube of vapor है, मैस इतना है, ओके, टेम्परेचर इतना है 98 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करेंगे, एंड दिस मच इज द प्रेशर. एम आर कैलकुलेट करना, तब आपका फॉर्मूला में जरा सा चेंज क्या आएगा, आप एम आर को सब्जेक्ट बना लेंगे. बड़ा कॉमन ये क्वेश्चन आते हैं. एन इज इक्वल, सॉरी, टी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड पी वी इज इक्वल टू एन को आप क्या कहेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, एम आर आर टी. तो अब आप देखें प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम सीएम क्यूब में दिया हुआ है, अब मीटर क्यूब में करेंगे बाय डिवाइडिंग विद 10⁶. मैस आपका जो है दिया हुआ उससे 0.some ग्राम्स, आर कांस्टेंट है, और टी जो है टेम्परेचर है, उसको करेंगे, एम आर को सब्जेक्ट बना लेंगे, जनरल गैस इक्वेशन यूज करेंगे. Okay. The table gives data on the physical properties of 5 substances A to E. Copy the table and fill in the gaps. A substance got a high melting point, electrical conductivity poor in solid. In liquid it is good. It mean melt कर दिया तो होगी अच्छी, तो इसका मतलब ये को आयनिक होगा. Because in liquid form, if electrical conductivity is good, it mean
इट इज नॉट अ मैक्रो कोवलेंट, वो तो उसकी लिक्विड में भी नहीं होगी डायमंड की, वो होता ही नहीं लिक्विड, पहली बात। सो टाइप आयनिक होगा बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। Melting point very low. As a solid, no electrical conductivity. As a liquid, no electrical conductivity. Type of structure. So it means physical word is force A to E. Let's see if there are questions. Explain the magnitude of the melting point electrical conductivity of substance A. Explain the magnitude, high or low, of the melting point electrical conductivity of substance A. So since it is ionic substance, so the magnitude of melting point should be high, and electrical conductivity should be good in case it is molten. Explain the magnitude of melting point electrical conductivity substance B. Substance B, low melting points, a simple molecular structure, weak intermolecular forces, and electrical conductivity is nil as it's a simple molecular structure, has no free electrons or ions. It has a simple molecular structure. Both in solid form and both in liquid form, it has poor electrical conductivity, जो आप इसमें fill करेंगे. Same goes for high, poor and poor. It means melting point तो high है, लेकिन solid और liquid दोनों में poor है. So it means it is giant covalent. C वाला. Neither solid nor liquid, कुछ भी करें इसने conduct नहीं किया. लेकिन melting point बड़ा high है, तो mean diamond type, macro covalent. Melting point high as a solid good, the liquid giant metallic है, तो इसका मतलब है लिक्विड में भी करेगी, मेटल तो हर हाल में करेगी. और ई पार्ट देखें, मेल्टिंग पॉइंट हाई एज अ सॉलिड पुअर, एज अ लिक्विड जाइंट कोवलेंट. तो एज अ लिक्विड भी पुअर ही होगा, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, कुछ क्वेश्चंस रह गए जो आप लोगों ने बोले करने. आंसर्स आर देयर इन द बुक. सो इंशाल्लाह विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, मोल्स बेसिक प्रैक्टिस. उसमें स्पेशली जो होगा कुछ टॉपिक्स हैं जो अब पहली बार पढ़ेंगे, लाइक mass spectroscopy, how to find ARs, correct the ARs, sorry, and how to find the isotopic masses, and how to deduce an organic compound by breaking it up into a structure and then finding out MR. किसी का भी MR कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो उसमें मेन वो है. बाकी सारे हम मोल्स रिवाइज करेंगे जो हमने ओ लेवल्स में किए. There's nothing new in that. एनी क्वेश्चन? निसार फातिमा, आपने टेस्ट का पूछा था. आई ट्राई कि मैं आपको टेस्ट भेजूँ. ओके, अगर इस वीक नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे आप लोगों को एक टेस्ट दिया कर. ठीक है ना? ओके सर. क्योंकि आपने इतना एक पढ़ लिया कि आई थिंक अब आप लोग कुछ पास के क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे. बिकॉज इनिशियली ओ लेवल्स में तो हो जाता है, ए लेवल्स में बच्चों से होता ही कुछ नहीं, तो टेस्ट कर देना होता है. तो आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है और फिर जो है टॉपिकल प्रैक्टिस करते हैं साथ में. कुछ पेपर्स मैंने भेजे हैं, उनको भी आप गो थ्रू करें, तो सीक्वेंस में ही क्वेश्चंस होते हैं. इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं. एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.